of my professor invited me last week, I think 2 weeks ago, in their college to give me the talk. Even on that, I mentioned that college is not too much important. And my professor told me that path, you don't need to say this to our students. A very warm greetings to all hustlers, inventors, and future entrepreneurs. Have you ever dreamt of launching a tech empire before you even finished college? That's exactly what our guest today, Mr. Parth Makwana, did. He's the founder and the chief operating officer of an IT company, TST Technology. And at just 22, he's already making waves in the industry. On behalf of the incubation cell of Shahid Bhagat Singh College, we extend a warm welcome to you, Parth. Thank you so much for joining us. Thank you so much, team. Thank you so much, Bhagat Singh College as well, for inviting me. I'm very excited for today. Yeah. So, sir, the incubation cell at Shahid Bhagat Singh College, Delhi University, is a dynamic hub for budding entrepreneurs. We are driven by a clear vision to be the ultimate destination for entrepreneurial growth. Our vision revolves around supporting passionate entrepreneurs. We believe in empowerment. Our commitment is to provide upcoming startups with necessary tools, guidance, and unwavering support to transform their unique ideas into thriving businesses. We understand that entrepreneurship can be challenging, which is why we stand as a trusted partner in innovation. Oh, that's good. Introducing Introducing you all TST Technology, where innovation meets excellence. The dynamic team is dedicated to tackling industry challenges with fresh ideas, offering a wide spectrum of services including the IT consulting, app and web development, cloud services, and DevOps consultancy. Centered around client satisfaction, TST Technology prioritizes your business services. Before hopping into our questions, I'd like to request Parth to add bit more details to the company, what so that our audience can get to know what exactly TST technology is into. Sure, sure. Why not? So, first of all, thank you so much, guys, for inviting me. And hi to Aditi, Shan, Mr. Khan, Aziz, and what's your good name, by the way? So myself, Anubhav. Ye- Anubhav. Oh, nice experience. That's good. So, friends, I am the founder and the CEO of the TST Technology. Our company provides technological solution to business and the startups. Right now, we are the more than 30 people team, and I have the two offices in the Gujarat, one in the Ahmedabad and one in the Surat. And our company providing the services of the software development, SaaS product development, application development, DevOps consultancy, and till the date, we work in more than 7 different countries like US, UK, Singapore, South Africa, Dubai, and Canada. Even in the India, we have the clients from 7 to 8 different states. And we are working with some of the good clients like who is the investor of the Google. One of our start raise funding from the Columbia University. One of our startup raise funding from the Motilal Oswal Group. Even some of our clients are selected into the Y Combinator and the 100x VC. So we are working with this kind of the good clients. So exactly what and our company's main vision is to helping the entrepreneurs who want to impact the life of the society. अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं जैसे कि एक्सेल, जब मैं थर्ड ग्रेड में था तब मैंने पहली बार एक्सेल सीखा था अपनी स्कूल में. Managing the finance of my company on the Excel. My daddy is chief manager in the bank. He is also using the Excel in the bank. Even the any big company MNC you can choose, they are using the Excel. So Excel change the life at day-to-day level, at very niche level, right? So we want to make this kind of the software and empower the life of the society. That's why we are working. That is our reason. Uh, Thank you so much, Parth, for giving our audience a very brief insight about your company, and I hope that now our audience will be able to well relate to our questions. So I hope you two are excited as we are for this illuminating and enlightening conversation. So let's get started. Sure, sure. Ishan, what's your mute if you are speaking something? Sorry, sir. So, sir, let's rewind back to 2021. You were a 19-year-old engineering student hungry for something beyond textbooks. So, sir, what sparked the vision to launch TST technology right during your third year of college?
So can we say that did your Gujarati mind still go for a business than doing a course only? Actually, there are the more than two to three fundamentals I can say. So actually, in the 2021, I was 21 because I born in the 2001. So, but I started my working when I was 2019. I was doing the blogging, did the network marketing business, started the e-commerce store, did the blogging and the podcast. Also, did the freelancing work in the four to five different companies, right? As an intern and as a core team member and as a startups in the. I was working so many things. And what happened is I am from the computer engineering background. I was doing the computer engineering in my college. So my old friends are the engineering mindset people. They are not into the marketing field like me, but I love the marketing, branding, and the selling, this kind of stuff. I want to open the digital marketing company, but I didn't get a chance. I didn't get any co-founder who can join me because every person is the doing the engineering stuff. But what happened is ki when I was in my second year, third year of the college, I already have the good clients from the Chicago, UK, Dubai, Delhi, and Mumbai. So and other some places. I was doing the freelancing. I was providing the services of the LinkedIn, social media marketing, lead generation, that kind of the stuff. But I am not somehow satisfied because that is the service, right? X is ली, Y amount लिया, and A deliver कर दिया. I am not satisfied. So what I did is I was in touch with my friends, the Access and Hiren. They are also doing the something. The Access was working on the designing and application development. Hiren was learning the website development, and they are also doing the kind of the freelancing stuff. So I just did them a conference call and I tell them why to focus on different thing by the different people. Let's come together and let's build a like kind of the small company and we'll provide it to our service to clients because it's a very definitely right सोशल मीडिया की कुछ टिकट साइज होती है जो कि काफी कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेशन था एंड इट्स अबाउट द स्केलेबल थिंग राइट सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ द what will happen you will gain only the followers and then nothing but in terms of the software right you actually deal with the companies users customers you actually deal done with the so many things so it is the scalable thing and you can reach to the billions of the people so that we choose so it's how we started the TST technology and even at that time we want to become something very big like Google or Microsoft we are telling the stories like we will also become this kind of company very soon. That's very motivating. So So that was really impressive. So now let's talk about turning lemons into lemonade. As we know, just 6 months after you starting your company, you opened your own office of TST technology. So I wanted to know how did you manage that while still dealing with your studies and also managing the chair of the founder and the co-CEO of the COO of the TST technology. Honestly speaking rather than buying the office or the furniture stuff, right? I was required the more time to convince my parents because they were not agree. Actually, what happened is I was living in the society. That is name of that is Sojanya. So in the same society, I decided that okay, let's bought a flat there and we will work from that flat only because my both partner had in access from the different cities and they were living in the hostel. But it was the last semester of the college, so they decided, okay, no, let's not live in the hostel and we will start something on and this kind of stuff. So I remember कि I started the TST Technologies first office. The number was B1502 and on the 15th January 2022 yes it was a गुजराती में बोलते हैं कि वासी उत्तरायण मकर संक्रांति के बाद का दिन होता है हम उसे गुजराती में वासी उत्तरायण कहते हैं तो तब का दिन था and what we did is I just started the office with the only three tables and five chairs but honestly speaking that was a really very ambitious thing and it was very inspiration for me till head because on that day I ordered only 50 samosas for the guest who come for the inauguration. I count for the per samosa price as well, ki how much I want to spend on the snacks. Because that time was very hard. I need a budget, I need a rented. Our company was a profitable since the first month, but what we have to we need to manage the cash flow because we are too much invested into the furniture, displays, and other technical stuff as well. So we started with that. Even so many guests we invite, right? We invite our friends, family, our relative, native, our neighbors. It was very inspirational stuff. So actually, what happened in the US and UK, the people have the garage, but we have the flat. So we started from the flat. Even still, I have the pictures. Ki at least after 5 or 10 years, I will show these pictures to my team and the other fellow members. Ki from where we started, you should remember this. So it was very inspirational stuff. And about the managing the thing,
Honestly speaking, I never give high priority to my college. At least in my last 2 years, I never give any high priority to my college stuff. So it was quite good. Reason is because of the corona. Because of the corona, I get a mass promotion by 2 to 3 semesters. Because when I entered the third year of my engineering, it was third semester. So corona started, so I get 2 to 3 times the mass promotion, and after this the college was online only. So in my online stuff, my friends are doing the my attendance, and I was doing the work. And what after that, what happens is we just need to do the submission exam. So on that time, I'm just doing that. So it's how I did. I did the honestly speaking, I copied the assignments, copied the practicals, and copy from my friends, borrow from my friends, and how I submitted. And it was the main challenge was about convincing my friends to work with me at that time, building the team, and convincing my parents. Yes, please give me some freedom. I want to do this. I want to invest my money in this. It's how we start. That's great, sir. Now I hope you missing those 3 4 semesters that you are talking about. I think it was worth it if you look back at it now. We can say no comments on the semester in college. And Actually, sir, what how? happened is one of my professor invited me last week, I think 2 weeks ago, in their college to give me the talk. Even on that, I mentioned that college is not too much important. And my professor told me that Parth, you don't need to say this to our students. So that's I'm not doing any comments. Certainly, certainly, sir. And sir, how tough was it for you to convince your parents at this early age to start something of your own? Could you share a bit about that? Oh yeah, why not? So as I mentioned, right, we started with the 5 chairs and the 3 tables, but there are some necessary things we need to buy, like rent of the flat and some of the computer stuff, right? Display, laptops we require. Even in the basic stuff like electricity stuff, fan, lamp, and the so many other stuff. So it was required around 1.5 lakh of the investment approximately. Even at that time, I was in only the final year of my college. My last semester was going on. Even just I finished the exam. So at that time we are preparing for that. So my parents told me, "Ki, you don't need to invest this kind of the 1.5 lakh rupees because that time it was really costly. It was costly. It was not a small amount at that time. So my parents convinced that let's start from the small. Even right now we're running well, right? Even company is doing good profit. Then why not to operate from this? But it is not a scalable way. We need to do so many Zoom calls, Google calls, online meeting. If we come together, if we discuss together, right, it definitely saves some kind of the cost, some type of the time and so many things. But I convinced my parent, don't worry, हम एक ही सेम ही सोसाइटी में फ्लैट रहो, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट इधर से मैं अभी देख सकता हूँ उसकी बालकनी, जब ये मेरी क्या बोलते हैं विंडो ही है मेरे रूम की, यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ, मैंने उसके सामने लिया था, देखो कुछ भी होगा तो आप वहाँ पे आ सकते हो। आप चिंता मत करो। And in terms of the negotiation, right, my dad was with me while I was buying the furniture stuff. I was buying the fan and the lamps. My mom was with me when I was going to buy the chair, tables, and other stuff. So they really support me. They first of all they try to convince me, कि, yeah, don't do this. But after that, they really support me because somehow he trust me. कि Parth will do something because I was doing the freelancing from the scratch. He was saying me. I didn't crack my IIT JEE exam, but from that time they are saying me, they are watching me. I did it. I started the freelancing. I built a small agency. Now I want to grow that. So they said, okay, no problem. Do it by yourself. That's great, sir. Once, Later, I forgot to share one thing. yes, To sir. start that office, we didn't take our salary for the 5 months. We started our company in first July 2021, right? So I took my first salary only 10,000 in my November because we definitely required the cash flow. That's why some of that office is very important because it was cost me the 6 months of my rent rate, 6 months of my salary. After that, we take a good salary. So that is also Okay, one sir. thing. Yes, sir. मतलब your dedication and passion gave your parents a confidence to bet on you. We can say that. या सब कुछ कर लेंगे अपने हिसाब से, इतना Yes, sir. भरोसा था। लेकिन वो था कि जो करना है तुम खुद से करो। लिमिटेड बजट में करो बिकॉज वो समय क्या होता है जब तुम्हारे पास बहुत सारे स्टार्टअप में भी देखा होगा कि बहुत सारे पैसे आ जाएगा तो डिसीजन थोड़े लैक होने लगते हैं। बिगाड़ो, यूज करो, किसने बना के, लेकिन तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना तो हम उससे कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हो। Yes, sir.
And so you got, as we know, you got the last seat in your engineering course and didn't get into your dream colleges like IIT or NIT. So, sir, how did you get the motivation still like you were facing a major set off in your college journey? Because we have seen that if the students don't get their dream colleges, they become depressed, and so it's become difficult for them to start something or to focus on something. So how did you do that, sir? Honestly speaking, actually, I was in a depression kind of stuff for my whole year, because what happens, my all close friends from my 12th science to get placement into the that IIT Kharagpur from that Sundar Pichai pass out. Four of my friends are got selected into the NIT Surat SVNIT. One of my friend no great admission in the DAIICT. Maybe you heard about that. Ambani's college. DAIICT is very big college that is running by the Ambanis. And other my three of friends are get into the very big colleges, self finance colleges, and the top government college. So somehow it was the issue. Okay, my all friends are going to good college, but I have not. The 50% इशू तो वही था कि मेरे सारे दोस्त अच्छी कॉलेज में गए लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। थोड़ा पीयर प्रेशर भी होता है ना कि ओ हो हम सब अच्छी जगह चले गए, तुम तो रह गए। फैमिली से भी थोड़ा बहुत होता है कि वो तेरे साथ ही पढ़ रहा था, तेरा दोस्त ही था, लेकिन फिर भी देखो उसने आईआईटी कर लिया, एनआईटी कर लिया, लेकिन तुझे से नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं रिलेटिव्स वगैरह देख लो। So the motivation was that ki when I was in my 8th class, so from that day I started watching the Discovery, and I was watching too much US and Canada stuff. So from that day, I love the US. Big buildings, big stuff, big companies like Tesla, Microsoft, Apple, Google. So somehow the that things I have in my mind. So I just think कि okay जो हो गया अभी उसको कुछ कर नहीं सकते हैं. But in my first year of my engineering, that one person come, he offers me the network marketing, जो कि मेरे घर भी लिया, लेकिन रोड से चला देता वो तो मैं कभी नहीं करना चाहिए। तब ज़्यादा पता नहीं चलता था, इसलिए कर लिया। So I started doing so many things. नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया, फिर मेरे एक सीनियर स्टार्टअप चलाते थे जो कि ऑनलाइन स्टेशनरी प्रोवाइड करता था, उनके साथ काम कर लिया। एक मेरे दूसरे सीनियर थे जो कि ऑनलाइन ट्यूटर प्रोवाइड करते थे, तो उनके साथ काम कर लिया। फिर कोरोना आ गया तो फिर मैंने एक दो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में इंटर्नशिप कर ली, फिर मैंने एक एंजल फर्म थी वहाँ पे इंटर्नशिप कर ली, फिर उसके साथ साथ मैंने लिंक्डइन मार्केटिंग एंड दूसरी सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया एज अ फ्रीलांसर। तो थिंग इज कि देखो इन सब के पास अपॉर्चुनिटी बड़ी है। सुंदर पिचाई हर 2 साल में वो उनके कॉलेज विजिट करने जाते हैं, आईआईटी खड़गपुर, हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो थिंग इज कि लिंक्डइन पे फोकस करो, वहाँ पे अच्छे लोगों को ढूंढो, उनसे कनेक्ट हो, लेकिन कुछ करो। बिकॉज लास्ट सेट में उसका भी कुछ होने वाला नहीं था, वहाँ भी ताने मिलते थे कि यस तेरे जितने ही मार्क आए, ओहो हो मुझे फर्स्ट क्लास आया, लेकिन तू तो इसमें तेरे को केटी आ गई। तो इस तरह के ताने भी करंटली दोस्तों से भी सुनने को मिलते थे, लेकिन समाज दिमाग में कहीं ना था कि नहीं नहीं नहीं, कम बैक करना है, आंसर देना है इन सारे के सारे तानों का। That's so motivating. So that's right. Anubhav, So your book, LinkedIn Organic Growth, became an instant hit as you became the Amazon bestseller only in 1 month of publishing it. So I wanted to know how does it feel to be an Amazon bestseller, firstly, and that too at such a young age, and what does this title feel to you personally? Oh, okay. Actually, I was just talking about that book 2 days ago with my team, because still I wrote a book on the LinkedIn. So LinkedIn is the main thing we are following at a company. Even our right now 80 to 90% business come from the LinkedIn only. So I was teaching my team about LinkedIn. So what happened is कि, in my second third year of college, as I mentioned, right, I have the good clients from the Chicago, UK, Dubai, Delhi, Mumbai, so many places. Here I got good opportunities. I started my podcast, that is the Start Today podcast. That podcast was listened in the 40 countries, and I interviewed the TEDx speakers, John Stock speakers, so many other good entrepreneurs who raised the funding, who are the multimillionaires. So that kind of the guest I got from the LinkedIn. So I thought, okay, why not to write a book on that? Because it's not possible that each and every person I come and meet and do the meeting, because I'm getting so many inquiries from my social medias. People are DMing on the Instagram, LinkedIn, WhatsApp, ke Parth, how you get the projects, how you got this kind of opportunities, how you're doing the freelancing in your early college days. So they're asking me. And what I'm doing is I just send them a Google meeting link and I'm explaining them, you can do this, you can do this. So I just thought that okay, let's write a book on that. Actually, I love the books personally. Since last 3 to 4 years, I am reading the book each and every day regularly. Even no matter it's a holiday, it's a
newer stuff. It's Christmas, even my birthday, my mom's birthday. I even when I go for the traveling, when I go on a trip, I always keep my diary, keep my book. Here's my diary. I always keep my book together. So that's why I come to the idea कि at least लोगों की help कर देंगे. And books तो I love. मुझे उधर काफी टाइम से बनने का इच्छा भी था. I thought let's wrote the book on that about LinkedIn कि which strategy I use and which strategy you can use for yourself. So and what happened is कि it was really amazing moment. So when I become the Amazon best-selling author, I call my one of my close friend that time, and I also invite my mom in my room, and और to मेरी मॉम एंड मेरे दोस्त दोनों को साथ में बोला था कि यस आई एम बिकम द अमेजन बेस्ट सेलर ऑथर. मतलब काफी मजा आया था उस टाइम. अभी कुछ ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन वो अच्छा फीलिंग काफी अच्छी थी. इमोशनल भी हो गए थे थोड़ा. इवन मेरे कॉलेजेस के प्रोफेसर वगैरह से मैसेज आ रहे थे कि ओ फार फार गुड. सोशल मीडिया पे पोस्ट की तो उन लोगों को मेरे प्रोफेसर से भी कमेंट की थी कि कांग्रेचुलेशन, एंड दैट वाज रियली गुड. बिकॉज वही प्रोफेसर थे जो कि मुझे वाइवा में हर बार कहते थे कि नहीं नहीं यार तेरे तुझे तो कुछ आता नहीं है, छाने दो. कम मार्क्स मिलते थे, 10 में से 10, 3-4 मार्क मिलते थे. That's truly inspirational, sir. I hope our audience who are not much into studies or planning to start something of their own will get surely get some good motivation out of this. Hope so. Ansh, Yes, sir. So sir, you recently introduced Toolpit AI. And sir, I am just curious about the motivation behind this startup. And sir, how do you evaluate the potential of AI industry for transformative impact? And what strategic opportunities do you envision for your new company within this dynamic and evolving landscape? Okay, okay. So after starting the TST technology, I got a opportunity from one of my client from the US. He wants to start the Web3 technology companies. We want to work on the blockchain, NFT, crypto, and the metaverse. So we did the partnership with him. We started the Web3 company, but that boom was for the few months only, 8 to 10 months. There is one few months, 8 to 10 months. Gave NFT is booming, crypto market is booming, blockchain hit the high $52,000. I seen that days. Even we got more than 7 to 8 Web3 projects, very good projects. Even and that is the main reason key from the that initial phase TST got a good profit. बट व्हाट हैपेंड दैट के वो बूम चला गया. बोलते ना गुब्बारा फूट गया. फिर एनएफटी मार्केट काफी नीचे चला गया, मैं मेटावर्स मार्केट चला गया, बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, छोटे मोटे सारे सारे खत्म ही हो गए. एंड बट आई फाइंड दैट के चैट जीपीटी इज बूमिंग. So few months ago, almost last year, I was driving a car to reach my office. I was going to my office. So ChatGPT is going. One of my friends called me for the even our team is discussing कि ChatGPT से होता है ये हो जाता है. Even दूसरे से ये वाले दूसरे मिर्चंडी वगैरह टूल है, फिर आइडियोग्राम वगैरह जैसे टूल है वो यूज करते थे मेरी टीम. एंड आई फाइंड दैट कि मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं. देयर आर सो मेनी टूल, बट विच वन इज द मोर ऑथेंटिकेट. सभी लोग ना एआई नाम लगा देते हैं, लेकिन एआई कुछ चीजों में होता भी नहीं है. विच वन इज मोर ऑथेंटिकेट. दूसरा कि काफी सारे टूल मैंने भी यूज किए थे, उसमें कैसा होता था कि सारा का सारा काम कर ले, इमेज डाउनलोड कर ली, वीडियो वगैरह बना लिया, फिर जब डाउनलोड करे ना तब वो बोलता है कि अभी यू नीड टू पे अस. राइट. तो लोगों को पहले से पता नहीं था कि फ्री था कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल वगैरह था, तो काफी सारी प्रॉब्लम थी. एंड दूसरा भी एक प्रॉब्लम था कि कौन सा टूल मैं यूज करूं, मुझे पता ही नहीं. जैसे कि आपको ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाते हैं तो यू नीड टू सर्च द एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप. बट हमारे toolkit.ai पे आओगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने सिंपल सर्च किया कि मुझे अपने एचओडी को ईमेल लिखना है, या फिर मुझे मेरे असाइनमेंट के लिए क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन बनानी है, या फिर मुझे सोशल मीडिया प्लान के लिए वीडियो बनाना है, तो आपकी जो क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग एआई टूल यू विल गेट. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट कि हमें एआई इसलिए यूज करना चाहिए जिससे कि हम अपना खुद का पोटेंशियल बढ़ा सके. पहले क्या होता था कि ऑनेस्टली स्पीकिंग माय इंग्लिश इज नॉट टू मच गुड. आई डोंट हैव वेरी लेस ग्रामर स्किल आई हैव. सो आई हायर वन राइटर, आई राइट माय पोस्ट बिकॉज मुझे मेरा टच ही चाहिए. उसको मैं बोलता था कि तुम इसका इंग्लिश करेक्ट कर दो. राइट नाउ व्हाट हैपेंड इज आई एम राइटिंग माय पोस्ट. मैंने चैट जीपीटी को मेरी पुरानी पोस्ट दे दी है, उसे बोला कि इसका तुम टोन मैच कर लो किस तरह से. फिर मैं उसे बोलता हूँ कि इसको तुम जस्ट एडिट कर दो, तो चैट जीपीटी अपने आप कर रहा है. सो मेरा पोटेंशियल काफी बढ़ गया. मुझे एक बंदे की सैलरी नहीं दी पड़ी. मैंने एक पर्सनल एक बंदी रखी थी जो कि मेरा कंटेंट राइटिंग का काम करती थी. उसका टाइम सेव हो गया, अभी वो कोई और काम कर सकती है. सेम विथ माई टीम. जैसे कि कोई बेसिक चीजें करनी हो, कोई बेसिक इमेज बनानी हो, कोई बेसिक वीडियो वगैरह बनाना हो. इवन राइट नाउ माई टीम इज क्या बोलते हैं कि मॉडल चैट जीपीटी के मॉडल को भी ट्रेन कर रहे हैं कुछ टेक्निकल स्टफ से भी, कि कोई छोटा मोटा कोड लिखवाना है, फिर कोई क्या बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम वगैरह बनाना हो, फिर या फिर वायर फ्रेम वगैरह बनानी हो, तो वो भी वो चैट जीपीटी से करवा लेते हैं. सो एआई से हमें ना खुद का पोटेंशियल मिलना चाहिए. हमें उसका क्या हमारे खुद की स्किल को प्लस वन पॉइंट मिलना चाहिए
ऐसा नहीं होगा कि हम खुद को डाउनग्रेड कर दें कि चलो चलो ये काम तो यार कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, लेकिन उसका यूज करके तुम अच्छा काम करो। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि लोगों को हम ज़्यादा एक्यूरेट टूल प्रोवाइड कर सके, लोगों को मार्केट में एआई के बारे में पोटेंशियल बता के उनकी स्किल डेवलप कर सके। आई कम विद दैट आइडिया कि हम ना एआई टूल्स की एक फीचरिंग प्लेटफॉर्म बनाते, एक काइंड ऑफ डायरेक्टरी बनाते, जहाँ पे तुम्हें पर्टिकुलर क्वेरी लिखोगे, उसके रिगार्डिंग एआई टूल यू विल गेट विद सो मेनी फिल्टर्स की प्राइसिंग का फिल्टर हो गया, कैटेगरी का फिल्टर हो गया, फिर दूसरे भी रिव्यू बेस का फिल्टर हो गया। So that's why I get that idea, and right now it's going really well. Even you can't believe कि only last 1 week more than 20 companies approach us to feature the tool on our toolkit. Even our traffic goes more than 1 lakh till in last 3 4 months only, and we got the approximately 2.5 lakh dollars of the credits from the IBM, Microsoft, Google, AWS startup credits we get. So the platform is going good. So, like you mentioned, you fired off your employee since because this technology had come. So we had seen like in recent time, many IT companies are firing their employees due to this technology. So, sir, any comments on that? Oh no no no! I would like to correct myself. I didn't fire her. Fire नहीं किया उसको, दूसरा काम कर दिया. I just mentioned that कि उससे मेरा वाला काम नहीं करना पड़ रहा है जो मुझे जिसके लिए जरूरत थी. So I would like to give you example here. But हमारी टीम ग्रो ही कर रही है पिछले टाइम से. Just in the January first month of 2024 in January we hired the 9 people. Total 9 people we hire. So where was I? Yes. Just imagine कि in the time of the 2000 eras जब आया था, तब बैंकिंग सेक्टर किस तरह से काम करता था, पेपर पेन पे, लेकिन वहाँ पे फिर डेस्कटॉप वगैरह आना शुरू हो गए. उसके 5-10 साल के बाद क्या हुआ कि नेट बैंकिंग वगैरह आ गया, तुम्हें बैंक पे जाने की जरूरत नहीं, तो ऑनलाइन सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हो. तो क्या उससे बैंक के एम्प्लॉय कम हुए या फिर बैंक की संख्या कम हुई? बिल्कुल नहीं हुई. उसके अलावा बैंक्स बहुत सारी बढ़ रही है, हर जगह पे तुम्हें एटीएम मिल जाएंगे, हर जगह तो हर एक आध किलोमीटर पे तुम्हें बैंक मिल जाएगा, बैंक के एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं. उससे क्या होता है कि एक नई कैटेगरी क्रिएशन होती है और चीजें ज्यादा फास्ट होने लगती है. आई रिमेम्बर कि जब कैनवा नया नया आया था तो लोग बोलते थे कैनवा से तो डिजाइन कर दो, लेकिन अभी लिंक्डइन पे भी तुम्हें पोस्ट मिल जाएंगे जहाँ पे लोग कैनवा डिजाइन हायर करते हैं स्पेशली. फिर वर्डप्रेस क्या है, दैट इज वन टूल जो कि वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन अभी लोग पर्टिकुलर वर्डप्रेस डेवलपर हायर करते हैं. तो अभी ऐसा मार्केट पे सीन है कि लोग ना एआई प्रॉम्प्ट राइटर्स हायर करते हैं, एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं ऐसे लोग हायर करते हैं, तो नई कैटेगरी क्रिएशन होती है. वो चीजें कम नहीं होती, लेकिन इट्स जो लोग एवरेज काम करते होंगे, जो लो लेवल का काम करते होंगे, लोग जो कि लोगों को छोटा मोटा उल्लू बना के कुछ छोटी मोटी सर्विस सेल करते होंगे, उनका काम नहीं चलेगा. लेकिन अगर तो अपने आप को स्किल अप करके बड़ी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, राइट, लोगों को ज्यादा फास्ट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, एक अलग एक्सपीरियंस देना चाहते हो, तो एआई विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. उससे ऐसा नहीं होगा कि लो जॉब खत्म होगी, लेकिन नई जॉब होगी. आप ये वाला बैंक वाला एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो. Yes. Anu? Thank you, sir, for sharing your insights about that, and I'm sure you'll make a very good and strategic use of AI for your new company. Sir, you have worked with some amazing clients across the diverse industries and diverse countries. So, any particular project that was not very easy for you all to do, but still you guys made it or rocked in it? So, any favorite project that stands out till now? Actually, there are the many, but I would like to mention one. So what happened is I was doing the simple networking on the LinkedIn. Actually, we signed the NDS, so I can't disclose the name, but I will share the story. So one person I got a link on LinkedIn. We did the networking meeting, and he mentioned that कि पार्थ भी got ideation funding. उन्होंने कुछ 30-40 लाख रेज किए थे ideation फेज के लिए, बट देयर ऐप वाज क्रैशिंग एट 50 यूजर्स ओनली. स्टॉक मार्केट की कैप थी, वो चल नहीं रही थी अच्छे से, वो क्रैश हो रही थी 50 यूजर्स के साथ ही. हमारे टीम के साथ उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ, हमने बताया कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. इवन देयर इज वन थिंग फ्रॉम द डेवऑप्स साइड जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता थी वो हम कैसे करेंगे. तो उसके लिए हमें टाइम लगा कि मुझे 2-3 दिन का हमें टाइम दो, वी विल डू सम रिसर्च एंड बैक टू यू. तो रिसर्च से मुझे अच्छा लगा कि नहीं, हमारा पॉजिटिव अप्रोच है. हमें नहीं पता था उस टीम ने, हमने मुंह पे बोल दिया कि हमें नहीं पता है. एंड स्टिल बैकएंड की साइड से कुछ चीजें थी जो कि एल्गोरिथम हमें बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन वी सॉ दैट कि टेक पे यार कैसा होता है कि अगर तुम कॉपी पेस्ट चीज में, जैसे कि तुम ओनली ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो ही तुम यार वो ऐसा होता है कि तुम्हें आता है, लेकिन टेक में हर बार नई चीज आती है, हर बार नई प्रॉब्लम होती है, एल्गोरिथम का लेवल अलग भी होता है, तुम्हें जो पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे होते हैं ना उससे आगे बढ़ना पड़ता है. तो थोड़ी बहुत रिसर्च की, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बैकएंड से साइड से इतना आइडिया नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया.
3 महीने का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसने 3.5 महीने ले लिया, बिकॉज 3 महीने और 15 दिन इज नॉट टू मच, राइट? तो क्लाइंट भी कन्विंस था कि वो हैप्पी थे, उनके पहले 50,000 पे फ्रेश हो रही थी, लेकिन अभी कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी। देन व्हाट हैपन कि उन्होंने 10,000 जितने यूजर एक्वायर कर लिए 2-3 महीने में, उनको मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने फंड कर दिया। एंड विद इन 2 years उस कंपनी की वैल्यूएशन जब मेरे पास आई थी वो 1.5 CR थी। राइट नाउ देयर वैल्यूएशन इज 100 CR एंड दे हैव द मोर देन 3 लाख यूजर्स। So So this this is the one surely, good success story we have. yes, sir, this surely deserves a standout project in your career. One of the good project they give me a really good money because we are working since last 2 years. Even they give me the reference of the seven other clients, 6 or 7. Yes, sir, when you build that kind of trust, it surely referral helps you in the IT industry. Yes, sir. Exactly, because we are into the B2B market. B2B market में कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है 5-10 लाख से कम का बनता ही नहीं है। So it's not possible कि तुम मेरे पास just lead आए और हम उसे convert कर सके। We definitely require good portfolio, good testimonials, good reference as well. Okay, sir. So now, so remember that LinkedIn post where you mentioned that during 2022 you can't afford a smartwatch for your dad, and after 1 year you gifted your father a car. How does that feel being an entrepreneur? Did that day you feel you are an actual entrepreneur? You can say. Even this watch I wear, I me and my partner was going for the one mobile repairing shop. वहाँ पे मेरे को आई थिंक चार्जिंग केबल लेना था, लेकिन उसके पास था ही नहीं। उसने बोला कि 20-30 मिनट वेट कर लो, बंदा आ ही रहा है। तो हम चले गए, पास में टाइटन की शॉप थी, लेकिन जो वॉच मुझे पसंद है वो काफ़ी महंगी थी, 25-30 हज़ार की थी आई थिंक उस टाइम पे। तो तब मैं नहीं ले सका, मेरे डैड का बर्थडे आ रहा था। एंड बट आफ्टर दैट व्हाट वी डिड इज जस्ट अ मिनट, आई नीड टू क्लोज द डोर। So my dad was planning to buy a car at that time. He was checking the other cars in as well. So I thought कि उनका बर्थडे आ रहा है, कंपनी भी जल्दी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है हर बार फ्रॉम माय अर्ली डेज ऑफ द स्कूल्स। पहले कैसे डेज थे जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में था, राइट ग्रेड में था, तब मुझे वो खुद पढ़ाते थे। इवन जब मैं भावनगर से, अहमदाबाद से नहीं हूँ, तो अहमदाबाद जब मैं आना हो मेरे कॉलेज के लिए, तो उन्होंने अपने खुद के ट्रांसफर ले ली, सारे के सारी फैमिली को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया। So I was seeing that he was very supportive. So I thought, let's give him a car. एंड उसका भी काफ़ी अच्छा चल गया था। एक दो यूट्यूब वाले लोग भी आ गए थे कि तुमने 21 के एज में 10 लाख की गाड़ी खरीद के अपने पापा को दे दी। एंड उसके भी कहीं ना कहीं वीडियो पड़ा है, जो इंटरव्यू लेके आए थे, इंटरव्यू में आए थे, जो कार चैनल होते हैं ना, जो कि कार का वो रिव्यू वगैरह करती है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो हैपन, बट माय फादर वाज वेरी हैप्पी because he is mentioning with other their friends ke, see my son give me a car. He's running company, he's give me a car at he's only 21, he was in he's just passed out from the college, and this kind of story he's telling. That's truly impressive, sir. I hope people around you would surely take some motivation from you and But there is one thing with it I didn't mention on LinkedIn, that is this year मतलब this year means कि this last birthday I gave him a gold coin, but a gold coin with their face. तो सिक्के में क्या होता है, 1-2 रुपीज कॉइन में क्यों हमारी मुद्रा बनती है, राष्ट्रीय मुद्रा, लेकिन मैंने क्या किए कि फॉर पिंक गोल्ड कॉइन वहाँ पे उनका पूरा पूरा फेस वो कस्टमाइज बनाया, गोल्ड गोल्ड शॉप के ओनर से बात करके। सो लास्ट टाइम आई गिव दिस, so you can say me, yes, I am too much good in gifts. definitely, sir, definitely. So you and your two friends from college buddies to co-founders built this empire in just a year. So what's the secret sauce behind your successful friendship to startup builders? And so what role does a good friendship plays if you guys have similar aspirations? um, आज भी मेरा ऐसा मानना है कि हमारे टीम में टीममेट कल्चर ही, हम एम्प्लॉय शब्द भी यूज नहीं करते हैं, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट पीपल आर वर्किंग विथ मी, दे आर नॉट वर्किंग फॉर मी। We should have the transparency. On the Diwali, whatever the gift I will get from the company, my intern will get the same gift. Whatever the food I'm eating in my parties of the company and while doing the company, my team will eat the same food. So I believe in this kind of stuff. लेकिन लोग आपके साथ तब ज़्यादा जुड़ते हैं एंड आपके साथ तब ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं when you show them a vision, when you show them a result.
As I mentioned, Daksh and Hiren was also doing the freelancing. They are good in their field right now. They are managing the whole team from the technical side. So what happened is Daksh is also doing the freelancing. He was doing the application development, the designing. Hiren was learning the website development. So I tell them, I show them result because they are also getting finding some trouble to get clients. उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे थे लेकिन मैं सोशल मीडिया की तरह से छोटे मोटे क्लाइंट्स ले आ रहा था अच्छे खासे थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो रही थी तो आई टेल देम कि मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा तुम दोनों काम कर लेना इस तरह से स्टार्ट करते हैं लेकिन राइट नाउ व्हाट हैपन अभी टूलपेड का जो आइडिया था मुझे आया था राइट लेकिन हिरेन इज लीडिंग द होल टूलपेड टीम हमने कंपनी में एक और भी एक प्रोडक्ट निकाला दैट इज द नेम ऑफ दैट इज वूफर WOOFER.io so woofer is a server monitoring system we are building it's very high technical stuff अभी उसे समझाना नहीं चाहूंगा बट दक्ष यू नो व्हाट दिस दक्ष वो सारी की सारी लीड कर रहा है बिकॉज आई शो देम रिजल्ट कि नहीं देखो मैंने ये कर चुका है अभी हम लोग साथ में जुड़ते हैं तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं इवन दक्षिश ने भी खुद का अपना कर लिया हिरण की भी खुद की शादी हो गई लास्ट ईयर इवन उसका तो एक साल होने वाला है अभी नेक्स्ट फरवरी इस महीने ही 15-16 तारीख को सो जब लोग आपके साथ तब ज्यादा बने रहते तब ज्यादा टिकते जब उनका भी पर्सनली ग्रोथ होता है और एक्चुअली आई फॉरगेट द एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन आप वहां पे उस पे क्या बोलते थे यस अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप यार कहीं ना कहीं डेफिनेटली वर्क ज्यादा करती है बिकॉज सपोज कि रात के 10 बजे तुम्हें कुछ काम पड़ा तो तुम अपने एम्प्लॉय को टीममेट को नहीं बोल सकते कि प्लीज आप थोड़ा कर दो डेफिनेटली कर ही देगा मोस्टली लेकिन फ्रेंडशिप इज अनदर लेवल हम मुझे आज भी याद है कि जब रात के हम 4-4 5-5 बजे तक काम करते थे फिर सुबह सोते ही नहीं थे और नाश्ता करने चले जाते थे बाहर कहीं हमारे यहाँ पे एक नजदीक पार्क है जहाँ पे बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है तो पूरी रात भर काम करके हम वहाँ चले जाते थे काम कर खाना खाने इवन राइट नाउ डेज वी आर डूइंग द सेम थिंग कि हर हफ्ते में एक आध दो बार के साथ से देख ही लेते हैं कि नाइट आउट छोटा सा कर ले बाहर जाके कुछ छोटा मोटा घूम ले जहाँ पे हमारे मोस्टली जब बाहर जाते हैं तब भी हमारी बात ये होती है कि वो अभी हम बिजनेस में करना है इसे टेक ओवर करना है इस तरह के क्लाइंट्स को लाना है टीम को ये बढ़ाना है तो जो डे टू डे लाइफ होती है ना बातें वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस में बदल गई इवन जो हमारे वी गेट रियली गुड रिलेशनशिप्स कोई भी फैमिली का फंक्शन वगैरह हो तो काफी सपोर्ट मिलता है तो फ्रेंड्स एंड पार्टनर अगर दोनों एक ही है ना तो काफी मजा आता है Sure, sir. I hope our audience learns something from your friendship and try to build something with their friends. समटाइम आपको फ्रेंड्स को मोटिवेट करना पड़ता है उसके पास पोटेंशियल होता है लेकिन बड़ा देखने का वो नहीं होता तो तुम्हें वो दिखाना पड़ता है उनको साथ में लाना पड़ता है कि नहीं उनमें भी ट्रस्ट रखना पड़ता है कि उनको फेथ रखना पड़ता है कि नहीं तुम कर सकते हो कम जॉइन मी That's all friendship is about, sir. You have to motivate when one is doing. Yes, sir. And so we had seen your own clients give you testimonials that say your services are so special to them. Can you please give some of your tips for our viewers and budding entrepreneurs on your secret of successful startup and client handling? श्योर the if I say the one word that is commitment I told you the story of a company right कि जिनकी वैल्यूएशन 1.5 शेयर से 2 साल के अंदर 100 शेयर पहुंच गई लेकिन उसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम इशू आया था कि अब एक पेमेंट यूज कर रहे थे काफी वेल नोन कंपनी हो बड़ी नाम नहीं ले सकते उसका भी उसका पेमेंट केपीआई यूज कर रहे थे लेकिन उसमें कुछ इशू आया कहीं ना छोटा सा बग रह गया एंड कुछ स्टूडेंट थे जिन लोगों ने लूप वगैरह करके छोटा सा हैक वगैरह करके अप्रोक्सीमेटली 20,000 जितने पैसे निकाल दिए अकाउंट में से कंपनी के टेक्निकल इशू था काफी एक 2-3 घंटे R&D करने के बाद पता चला कि वो ऐसा कुछ हुआ है सो ऑन द सेम टाइम माय क्लाइंट आस्क के इसका रिस्पांसिबल कौन उस पे रिस्पांसिबिलिटी नाम की कोई क्या होता है कि ऐसा नहीं था कि 100% वी आर रिस्पांसिबल बिकॉज वी आर यूजिंग द एपीआई वो एपीआई की तरफ से गलती थी हमने जस्ट इंटीग्रेट की थी पेमेंट की एपीआई थी स्टिल ऑन द सेम डेट रात के 1-1:30 बजे हम मीटिंग कर रहे थे मैंने कहा कि कल सुबह ही आपको ये पेमेंट हो जाएगा बिकॉज तब हम ना उससे बैंक में चेक के थ्रू करते थे कंपनी अकाउंट का डिजिटल वर्जन नहीं था हमारे पास कंपनी अकाउंट था उसका सो ऑन द सेम डे आई ट्रांसफर द 20,000 रुपीज आई स्टिल रिमेंबर द थिंग दैट वाज 19,310 or 12 maybe so I transfer the same amount to my clients कहीं ना कहीं हमारी भी गलती नहीं थी उनकी भी गलती नहीं थी या फिर वो कंपनी भी गलती नहीं कर सकती इस टेक्निकल स्टफ टेक्निकल ग्लिच में तो किसी में भी आ सकता है जीरोधा में भी आता है पेटीएम में भी आती है और व्हाट्सएप भी कभी कभी डाउन होता है राइट इट्स टेक्निकल ग्लिच लेकिन हमने कमिटमेंट किया है तो वी आर रिस्पांसिबल दैट मींस आई एम रिस्पांसिबल मैंने उसकी लीड ली एंड दैट वन ऑफ माय क्लाइंट गिव मी रियली गुड रेफरेंस एज वेल 6 to 7 एज आई मेंशन सो मेन थिंग इज अबाउट द कमिटमेंट अगर तुम क्लाइंट को कुछ बोलते हो तो तुम उसे तुम्हें करके ही देना पड़ता है उससे तुम पीछे नहीं मूव कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे
टीम चली जाए, तुम्हारे फाइनेंशियल लॉस में चले जाए, या फिर तुम खुद ठीक ना हो, लेकिन तुमने कमिटमेंट की, यू विल डू इट, दैट मीन्स यू नीड टू डू इट एट एनी कॉस्ट। एंड हम दूसरा भी बिलीव करते हैं कि एट अ हाई, वेरी हाई क्वालिटी। हमारी कंपनी में दो तीन छोटे मोटे अगर बात बता दो, तो क्लाइंट में क्या होता है कि जब भी हमें पेमेंट करते हैं तो मोस्टली आई फाइंड दैट कि लोगों को सिंपल से थैंक यू लिखते हैं। हम एक थैंक यू लेटर सेंड करते हैं। मेरे क्लाइंट का जब भी बर्थडे होता है, मैं अपने खुद हाथ से हैंड रिटर्न नो लेटर उनको सेंड करता हूँ विथ गिफ्ट। जो भी हमें रेफरेंस देता है उन्हें भी हम गिफ्ट शेयर करते हैं, बट आई राइट पर्सनलाइज लेटर विथ माई हैंड। इवन इवन आई एम रनिंग द टेक कंपनी, आईटी कंपनी, लेकिन फिर भी मैं पेन एंड पेपर पे खुद ही लिखता हूँ उनके लिए जो भी मुझे लिखना है, एंड पर्सनलाइज आई एम सेंडिंग दैट, बिकॉज आई रियली लव देम। उनकी वजह से ही मेरी टीम को हर महीने सैलरी जा रही है, उनकी वजह से आज हमारी कंपनी खड़ी है कहीं ना कहीं। So we need to respect that, and we need, definitely need to be grateful to them. So commitment and trust is two things you can get. That's amazing, sir, that you value commitment and trust, and they are your most number one priority for client handling. So coming to the next question, since you talked about you are very much into reading and writing, so I'm sure you must be having some amazing collection of startup and investing books. So is there any one title that stands or has a very Oh, profound impact on your personal journey, and any book which you want to recommend with our aspiring entrepreneurs? sure, sure. I would like to not recommend one, but I would like to recommend two or three, because एक book से तुम सब नहीं सीख सकते। So personally, I love the How to Influence and Influence People. When I was in my first year of engineering college, I was very angry man। मुझे अगर दो बार भी तुमने कुछ बात बोल दी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहा था, इंट्रोवर्ट था काफी मैं स्कूल के टाइम में। बट व्हेन आई रीड दैट हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो मेरी फर्स्ट बुक थी। I really learned so many things कि how to convince people, how to do negotiations, how to manage the typical situations। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट के साथ, ये सीधी सी बात है, बिजनेस है राइट, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, टीम के साथ हो जाता है, इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो कुछ हो जाता है। बट तो पर्टिकुलर सिचुएशन को तो अपने कम्युनिकेशन से कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, लोगों को, लोगों से काम कैसे निकलवाना है, वो सारी चीज़ भी लोगों से, हमें अच्छी खासी इतनी अमाउंट देते हैं, उनको अमाउंट देने के लिए कन्विंस कैसे करना है। हमारी कंपनी का रूल है कि हम 30% एडवांस ही लेते हैं। तो 30% ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो द लैक्स ऑफ द रुपी। लोग तुम्हें इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हें उन्हें कन्विंस ही करना पड़ता है। सो अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना हो, लोगों को कन्विंस करना, नेगोशिएशन, इस तरह की बात सीखनी, तो मस्ट रीड द हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक। सेकंड थिंग इज अबाउट एवरीथिंग इज द माइंडसेट, कि हाउ द माइंड वर्क्स। दूसरा कि एक ब्लूप्रिंट वगैरह चीज होती है, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। वो चीज सीखनी है, ह्यूमन बिहेवियर वगैरह सीखना है, ह्यूमन साइकोलॉजी सीखनी है। यू कैन रीड द अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन्स। काफी अच्छी बुक है। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे समझने में, लेकिन आप एक बार नहीं तो दूसरी समझना है तो दूसरी बार पढ़िए। तो दिस टू बुक्स आप अगर पढ़ेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में काफी आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज पीपल डू द बिजनेस विद द पीपल। एट दिन में जो भी कंपनी से काम कर रहा हूँ, मैनेज कोई लोग ही कर रहे हैं, मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ लोग ही है। तो यू नीड टू नो कि लोगों से काम कैसे करते हैं, लोगों से ट्रीट एंड ग्रीट कैसे करते हैं। So that's why I mostly focus on the human behavior, human psychology, and communication. And if I come to the company side, right, business perspective, the most read the Steve Jobs book। मैंने पढ़ी, मेरे पार्टनर ऋण को दी, मतलब बढ़िया। हम पिछले 4-5 महीनों से उसकी बात कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, लेकिन उस बुक पढ़ने के बाद मैंने स्टीव जॉब्स का फोटो फ्रेम मंगा लिया। मेरे ऑफिस में था तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाता हूँ, उसकी पोस्ट कर देंगे उसमें तुम देख लेना। अमेजिंग बुक, कि किस तरह से उसने एप्पल को बिल्डअप किया है, किस तरह के एथिक्स वगैरह उसने फॉलो की है। सेकंड थिंग, सेकंड बुक यू कैन रीड अबाउट द बिजनेस, दैट इज शू डॉग, जो कि नाइकी की कहानी है। कि वो भी एक सिंपल सा बंदा था, उनके पास इतना कुछ बड़ा फंड नहीं था राइट, ना कि कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल थी, लेकिन फिर भी लाइफ में कितने उनका भी ब्रेकअप वगैरह हो चुका था, लाइफ में भी काफ़ी सारी परेशानी आती है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि उनका भी बेटा बेटा ही मर जाता है, उनका बेटा। इट इज़ वेरी अमेजिंग स्टफ। तो नाइकी यू शुड रीड टू गेट इनर इंस्पिरेशन। नाइकी एंड स्टीव जॉब्स, शू डॉग एंड स्टीव जॉब्स, जिसमें एप्पल एंड नाइकी की कहानी है। Sure, sir. I hope our viewers also incorporates the habit of reading into their lives and learn something from your recommendations. Thank you, sir. Uh, Sure. so, as we know, now you are in 7 countries, and expanding across 7 countries is truly impressive. So, sir, what are the crucial lessons you learned from diverse markets, and what was your approach to make a mark
in that market? Mm-hmm. सो आई हैव सम गुड थिंग कि जो भी 7 कंट्रीज है राइट, उसमें से 3-4 जगह पे तो ऐसा है कि दैट पर्सन इज़ द एनआरआई, एक्चुअल फॉरेन वाला हमारे पास फॉरेन पर्सन जो उनके सिटीज़न होते हैं उस कंट्री के राइट, वो हमारे क्लाइंट नहीं थे। तो एनआरआई से ना कहीं न कहीं हम एक पर्सनल रिलेशन अलग बना सकते हैं। ओह! आप इंडिया से, हम भी इंडिया से, यू नो हिंदी, आई आल्सो नो हिंदी। तो दिस काइंड ऑफ द पर्सनल रिलेशन वी कैन बिल्ड। लेकिन डाइवर्सिफाई मार्केट में जितना तुम चाहते डाइवर्सिफाई मार्केट में जितना तुम चाहते हो राइट, यू नीड टू लर्न अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, बिकॉज मेन थिंग इज टाइम जोन। कि यूएस में कोई अलग टाइम जोन है, कनाडा का अलग टाइम जोन है, यूके का अलग है, सिंगापुर दुबई, सिंगापुर दुबई का तो ठीक है, मतलब 2-3 घंटे आगे पीछे होता ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यूएस कनाडा यूके 10-10 12-12 घंटे, कई बार हमें रात को 2 बजे को मीटिंग वगैरह करनी पड़ती है। मेन थिंग ऑल्सो द कल्चर थिंग, जो यूके की जो पब्लिक होता है राइट, यूएस में थोड़ा ना चिल एंड फ्रेंडली कल्चर है, लेकिन यूके इज वेरी प्रोफेशनल। तुम उसे जो मैसेज भी कर रहे हो उसमें वो पहला लेटर पी कैपिटल, पहला लेटर जो गुड मॉर्निंग का जी होता है वो कैपिटल में होना चाहिए राइट, इस तरह की बातें भी नोटिस करते हैं। फिर किसी के स्पेलिंग में हमारे में एस आता है, उनके वहाँ पे जेड आता है राइट, स्पेशलाइज वगैरह पे इस तरह की स्पेलिंग हो गए, तो लोग इस तरह की बातें भी नोटिस करते हैं। तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, तुम कहाँ से मीटिंग कर रहे हो, व्हाट इज क्या बोलते हैं, तुम्हारा टोन कैसा है बोलने का, दैट काइंड ऑफ द थिंग्स दे आर आल्सो नोटिसिंग। तो कल्चर डिफरेंस काफ़ी आता है, एंड दैट्स द रीज़न कि क्या बोलते हैं, मेरी फैशन सेंस भी काफ़ी अच्छी होने लगी है उसकी वजह से कि कई बार अच्छे खासी चीज़ें पहनते हैं, जैसे कि आई वियर दिस, इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है इंग्लिश में तो, लेकिन मेरा हाथ काफ़ी लंबा है, मैं बहुत लंबा हूँ इसलिए। दूसरा कि लड़कों को थोड़े बहुत क्या बोलते हैं बाल वगैरह भी होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता अगर मैं ना पहनूँ तो, बट आई वेयर दिस टू बैलेंस द थिंग, इस तरफ वॉच एंड इस तरफ है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो आई लर्न फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ द cities and different countries. And one more thing, exactly what was the question? Which kind of the difficulties I face, or what was the thing? Like, what was your approach to make a mark in that market? Hmm. Approach. अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि श्रीलंका या फिर पाकिस्तान की बांग्लादेश से आपको अप्रोच करे कि आप मेरी ये चीज़ ले लो, इट्स मोर देन 90% चांस कि हम उनसे बिजनेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ना मार्केट में रेपुटेशन ब्रांडिंग ऐसी हो चुकी है। तो इन द ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन द यूएस, अफ्रीका, यूके मार्केट हमारे इंडियंस की ना कहीं मोर देन 50% तो छापना बहुत डाउन हो चुकी है जो एक्चुअल वर्क करते हैं। हम डेफिनेटली यार इधर सुंदर पिचाई एंड सत्येंद्र नजर की बात नहीं करेंगे, वो कुछ अलग ही है, और सीईओ लेवल पे हमारी ब्रांडिंग काफी अच्छी है। लेकिन जो हम वर्क वाला काम करते हैं ना, फ्रीलांसिंग वगैरह का काम, वहां से लाके इधर करने का, उसकी क्वालिटी लोगों का बहुत बैड एक्सपीरियंस है। मेरे ही क्लाइंट का ऐसा एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पैसे ले लिए उनको फिर बाद में रिप्लाई ना देते हैं, जिन लोगों के साथ काम किया उनको टोटल क्या बोलते डेडलाइंस तक डिलीवरी वगैरह नहीं देते हैं, उनसे ढंग से बात नहीं करते, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देते, इस तरह की चीजें पर्सनली फेल। आई रियली पर्सनली फेल। मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ ऐसी स्टोरी भी बोलते हैं कि वाह, तो मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतना अच्छा काम करोगे। मैंने ऐसे भी वर्ड सुने मेरे क्लाइंट से कि इंडिया में तो लोग करते ही नहीं है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट कि तुम अपने आप अपनी ब्रांड को, अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हो दूसरी कंट्री के सामने। मैंने अभी तक 4 से 5 स्टोरी सुनी है जहाँ पे इंडिया वालों ने, किसी ने काम किया और उनके पैसे ना दिए हो, उनको वक्त पे टाइम काम ना दिया हो। लेकिन कहीं न कहीं हमेशा मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि इंडिया की, भारत की रेपुटेशन दाँव पे लगी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बाहर जाके बोलेंगे कि भारत में ऐसे ही लोग हैं। क्या तुम रियली सुनना पसंद करोगे? तुम्हारे दादा, मम्मी-पापा, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री देख लो, जो लोग इतना अच्छा काम करते हैं। दुनिया हमारे देश के बड़े-बड़े बिज़नेसमैन देख लो, इतना अच्छा काम करते हैं। सुंदर पिचाई, सत्येंद्र नल्ला बाहर के कंट्री पे इतना अच्छा काम करते हैं। कहीं न कहीं 0.001% उनकी इमेज को भी इफ़ेक्ट होगा। You need to do this? Definitely not. सो मस्ट केयर अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस, बिकॉज़ जो होता है ना, टच पॉइंट होता है। तुम किसी को पानी ऐसे दो, पानी ऐसे दो एंड इस तरह से ट्रे में दो। सबसे अच्छा वे कौन सा रहेगा? ट्रे में पानी देने का। क्यों? बिकॉज़ दैट इज़ द टच पॉइंट कि आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हो, ग्रीट करते हो, उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हो। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। When you represent your company, your country, you need to take care about the touch points. So we definitely take care of that. उनके जो भी फेशियल वगैरह डेज वगैरह होते हैं उसका भी हम ध्यान रखते हैं। उनके टाइम्स एंड वाइज भी उनको फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह देते हैं। फिर वी ऑलवेज ट्राई कि उनका टोन हो राइट, वो मैं उनके इस तरह के टोन में हम बात करने की ट्राई करते हैं बिकॉज़ उनको थोड़ा फ्रेंडली लगे।
लेकिन वो हम 100% नहीं करते, बिकॉज वो फर्क पड़ता है यार। यूके का टोन, कनाडा, सबका टोन काफ़ी अलग होता है। कितना भी इंग्लिश सीख ले लो, हमें वो टोन लाने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। बट हमारे पास एक डेडिकेटेड 1% भी उसके लिए, जिसको बहुत ही अच्छा खासा इंग्लिश भी आता है, रशियन लैंग्वेज आती है, उसको फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है, बेसिक स्पेनिश लैंग्वेज भी आती है, जिससे कि वो दूसरे टोन में भी बात कर सके, दूसरे लैंग्वेज में भी बात कर सके। सो वी केप दैट पर्सन एज वेल। That's amazing, sir. Being so professional and even caring about little few things that are necessary, and you see every deal as a means of representing your country. So I'm sure our audience will learn a lot from this. So coming to the last question of this wonderful conversation, we have recently heard that you have entered the exciting world of angel investing. So, what excites you most about any new venture, and what qualities do you find most compelling in the potential startups? Okay, so there are the 3 to 4 different aspect, but I would like to start with the first one is about एक ना बंदा मेरे पास थोड़ा टाइम पहले आया था। उसने 5-6 महीने मेरे साथ इंटर्नशिप की, फ्रेंड्स का फ्रेंड्स था इस तरह से। फिर उसने छोड़ दिया, उसको खुद का कुछ करना था, उसके इंटर्नशिप में कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद इवन उसने कंपनी में जॉब छोड़ दी। मुझे 2-3 महीने बाद मैसेज किया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। नवरात्रि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल है, वहाँ पे उसे फूड स्टॉल डालना था, एंड मैंने उसे पैसे दिए। जितना मैंने पैसे दिए थे उसका डबल का उतना उसका लॉस था। उसने जो मुझे कमिटमेंट दी थी 25 नवंबर की, वो तो चली गई। लेकिन उसके 3-4 महीने बाद उसने मुझे पैसे वापस लौटा दिए। मैंने तो छोड़ ही दिया था कि इसका आई थिंक मुझे नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैंने उसपे ट्रस्ट दिखाया, उसको बोला कि नहीं, आई ट्रस्ट यू, यू आर ओनली 20-21, यू वांट टू डू द बिजनेस, आई विल सपोर्ट यू। तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में ना एक ऐसा मिलेगा कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। तो इस तरह के होता है। मुझे महीने में मैं मिनिमम 15 से 20 जितनी पिच डेक वगैरह चेक करता हूँ। लोग अलग-अलग रीज़न से फंड माँगने आते हैं। इनका एक अलग ही विज़न होता है ना, तो कई बार उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक पुश की ज़रूरत होती है। To give that push, we are doing the investment. Main reason is that. Second thing is कि हम ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक लाइफ में ना मैं बहुत सारी चीज़ सीख सकूँ। यस, मैं काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ नहीं सीख सकते। जैसे कि लाइक टाटा की बिज़नेसेस आप देख सकते हो। मिसाइल भी बनाते हैं, नमक भी बनाते हैं, गाड़ियाँ भी बनाते हैं, कपड़े भी बेचते हैं, सब चीज़ें। सो वी आल्सो थॉट दैट कि अगर हमें इस इंडस्ट्री में ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो हमें ना कॉम्पिटिटिव के बजाय कोलैबोरेटिव अप्रोच चूज़ करना पड़ेगा। इन लोगों को खुद वो ग्रो करे, उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। If you like the idea, if you like the team, we show the potential in that. And also main thing is कि I personally believe, जैसा कि मैं फास्ट एंड फ्यूरियस का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उसमें एक डायलॉग है, गाड़ी से ज़्यादा गाड़ी चलाने वाले दम होता है ज़्यादा। तो जिस गाड़ी चलाने वाले में दम होता है, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग फीलिंग। वो उसका भी एक छोटी-सी स्टोरी थी कि मैं 22 का हुआ भी नहीं था, मैं एंजल इन्वेस्टर था एक स्टार्टअप में। इवन राइट नाउ आवर कंपनी इज़ डूइंग द एंजल इन्वेस्टिंग इन द अनदर कंपनीज़, एंड उसमें कई बार रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। हमारे पास एक स्टार्टअप है जिसमें हमने 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी उनकी वैल्यूएशन 25 सीआर, वो भी ओनली 6 महीने में। तो 6 महीने में मेरे पैसे 5 गुना बढ़ गए। सो दिस काइंड ऑफ द रिजल्ट आल्सो वी आर गेटिंग दैट। सो कहीं न कहीं वो भी फन होता ही है दिमाग में। That's impressive, sir. So, thank you so much for joining us, sir. We have covered so much ground today, and your audacity and passion are truly motivating for all our young learners. As we wrap up, what's the one key takeaway you hope our audience members take away from this conversation? It is only one small sentence: explore more, achieve more. I did the so many jobs. I did the job of the network marketing, did the 5 internships, freelancing, did the blogging, podcasting, perfume company, and so many things. But never stop. Even chat is our fourth business that I started in the college. वो अच्छा चल गया, लेकिन अगर मैंने फर्स्ट या फिर सेकंड पे रुक गया होता तो डेफिनेटली नहीं आता। जस्ट डिजाइनिंग या फिर वीडियो सीख के रुक गए तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में नहीं आ पाते। व्हाट आई डिड इज की इंटर्नशिप की, बाद में फ्रीलांसिंग की, बाद में एजेंसी बनाई, बाद में कंपनी बनाई, फिर हम इंजीनियरिंग की तरफ पे आगे। आई डोंट नो आगे क्या करेंगे। इंजीनियरिंग के बाद भी कोई बड़ा आई थिंक चीज़ होती होगी कि बहुत मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ डॉलर की लोन वगैरह दे, जैसा कुछ होता होगा। आई डोंट नो क्या होता है, ब्लैक रॉक वगैरह से सीखेंगे। तो लेट्स सी, बट देन वन थिंग इज नेवर स्टॉप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, अचीव मोर। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये अनुभव के वास्ते एक्सपीरियंस है ही।
Thank you so much, sir. And I'm sure our audience will get to learn a lot from this. And your perspective has added immense depth to our discussion. Thank you so much for joining us. It's been a pleasure to have you.